Hello everyone. I would like to welcome you all in our today's special class. In this class, we are going to discuss a very special astronomical phenomena that is going to happen on 21st June 2020, the annular solar eclipse. So in this session, we will discuss what are solar eclipse and how it happens. Are you able to see my screen? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Very good. So today's discussion will be in this flow. First, we will discuss what is eclipse, the types of eclipse, solar eclipse, the types of solar eclipse, why does the solar eclipse occur, and why solar eclipse doesn't happen every new moon day. We will also discuss the differences between eclipse, transit, and occultation. Then we will discuss annual solar eclipse, phases of sun during eclipse, and we will also discuss how to observe solar eclipse and why solar eclipse is important for us. And at the last, we will throw some light on the special astronomical happening that is going to be happen on 21st June 2020, annular solar eclipse. Okay? अब जो आज की क्लास की हेडिंग है एनुलर सोलर एक्लिप्स, तो सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्लिप्स होता क्या है. व्हाट इज एक्लिप्स? An eclipse is an astronomical event that occurs when an astronomical object is temporarily obscured either by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer. This alignment of three celestial bodies is known as eclipse. Here I want to show a picture like this. There are three celestial bodies in this diagram. One is sun, second is earth, and third is moon. When these all three celestial bodies align in a single line, then it creates a special situation when a single celestial body can block the sun rays to other celestial bodies. Like in the first figure, we can see the lunar eclipse, यानी कि चंद्र ग्रहण. इसमें क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और मून के ऊपर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो क्या होता है? लूनार एक्लिप्स. एंड इन द सेकंड डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण. इसमें क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो सन की लाइट, सन की रेज अर्थ के ऊपर नहीं जाती है और वहां पर शेडो बन जाती है समटाइम्स के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम. So this is known as the eclipse. Understand? Now
types of eclipse. How many types of eclipse? As I shown in the picture, there are two types of eclipse. One is solar eclipse and second is lunar eclipse. Solar eclipse means Surya Grahan or lunar eclipse means Chandra Grahan. So broadly, there are two types of eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. Now discuss solar eclipse. What is the solar eclipse all about? In the picture, you can see the three celestial bodies, namely Sun, Moon, and Earth, aligned in a line. And here you can see the Moon comes in between Sun and Earth, and it blocks the sun rays falling on the Earth. When this situation happens, it makes solar eclipse because the Moon is blocking the sun rays and not allowing to follow on the Earth. So this is how the solar eclipse occur. सूर्य ग्रहण, जब अर्थ और सन के बीच में मून यानी कि चंद्रमा आ जाता है और वो सन की रेस को अर्थ के ऊपर नहीं जाने देता है, तब होता है सूर्य ग्रहण. A solar eclipse occurs when the moon passes in front of the sun, blocking it out partially or completely. The eclipse result in part of the earth and being covered in the shadow of the moon, like this in this image. Now types of eclipse. How many types of eclipse? Solar eclipse. So there are four types of solar eclipse: partial eclipse, annular eclipse, total eclipse, and hybrid eclipse. In partial eclipse, the moon only block a small part of sun. जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर का जो बॉडी है ये सन है और ये डार्क कलर का जो शेड दिख रहा है आपको ये मून है. तो डे टाइम में जब मून सन को पार्शली ब्लॉक करता है तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है. सेम वे जब मून सन को ब्लॉक तो करता है लेकिन उसको पूरा ब्लॉक नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ सम एस्ट्रोनॉमिकल रीजन. तो सन का जो कोरोना का जो पार्ट है केवल उसका कॉर्नर वो ही विजिबल होता है, बाकी सारा पोर्शन डार्क हो जाता है. एंड दिस इज नोन एज एन्युलर सोलर एक्लिप्स. Next is total eclipse. When moon completely blocks the sun. अब यहाँ पे आपको जो डार्क पोर्शन दिख रहा है बीच में सर्किल, ये मून है और इसके पीछे जो आपको लाइट दिख रही है वो केवल सनरेज है. सन कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है यानी कि छुप गया है. When this happens, it is known as total eclipse or complete eclipse. The fourth and the very rare eclipse known as hybrid eclipse. When it happens, the different observer on the earth may see total eclipse or partial eclipse. This is known as hybrid eclipse. यानी कि इसमें दोनों फेजेस दिखती है, पार्शली ये कंप्लीट भी होता है और पार्शली ये कुछ हिस्सा सन का छूट भी जाता है. ये बहुत रेयर केस में होता है और इसको बोलते हैं हाइब्रिड एक्लिप्स. सो देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स: पार्शियल, एनुलर, टोटल एंड हाइब्रिड.
And on 21st June, we are going to observe the annular solar eclipse. This one, the second one. Now it comes a question in our mind, why does the solar eclipse occur? Why? This is because of the place of Earth, Moon, and Sun. As we discussed earlier, when three celestial bodies complete in align with each other, then it blocks the other celestial body. On its orbit, when Moon comes in a straight line with the Sun and Earth, and Earth blocking the Sun rays to come on the Earth's surface. Because of the angular size of Moon and Sun from Earth, solar eclipse occurs on new moon day. So before we understand why does the solar eclipse occurs, we have to know two facts, that is the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. आपको पता है ना ये? सर कौन से पेज नंबर पे? ये बुक में नहीं है आपके, ये जीके का है। तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। व्हेन दिस ये दोनों जो ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व करते हैं, इट मेक्स अ वेरी रेयर सिचुएशन व्हेन दीज थ्री ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अलाइन इन अ सिंगल लाइन, लाइक दिस sun, earth, moon, or sun, moon, and earth. When this complete alignment happens, it creates a eclipse. And when solar eclipse occur, the moon comes in between sun and earth, and it blocks the sun rays falling on the earth. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, बीच में सन है, बीच में सन है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसकी ऑर्बिट में, और अर्थ के अराउंड उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। अब जब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब सन, मून एंड अर्थ कम्स इन अ straight alignment to each other, then it creates a very rare situation when the moon blocks the sun rays falling on the earth. When this thing happens, it creates a solar eclipse. Understand? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ये तो 24 आवर्स में एक बार हमेशा सन के पास में या उसके सामने आता है, आपको पता है ना? Yes, sir. आवर्स नहीं, सॉरी 27 डेज में, यानी कि विद इन 1 मंथ। ये पूरा एक रिवोल्यूशन 27 एंड 3.2 डेज में पूरा करता है। तो विद इन 1 मंथ ये एक बार इसके सामने आता है, इन दोनों के बीच में। तो हर महीने ये एक्लिप्स क्यों नहीं होता है? हमने जब ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो वहां हमने देखा है कि जो मून है वो 27.32 डेज में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू दिस we have to observe the solar eclipse once in a month or every month.
but it does not happen so. Why? Why solar eclipse doesn't happen every new moon day or every month? This is because the orbital plane of the moon is tilted 5 degree, as you can see in this diagram. The blue color orbital plane is the orbit of Earth, and the black color orbital plane or path is the orbit of moon. These two orbit, when we compare these two orbit, the moon orbit is tilted 5 degree. This is why, besides, the moon comes in between Earth and moon, but it does not completely block the sun rays every month or every new moon day. Like this. The moon orbit is tilted 5 degree, like this. So when the moon comes in between sun and earth, so it does not make a complete alignment so that it can block the sun rays because of this 5 degree tilt. So it happens in very rare case. That is why we do not observe the solar eclipse on every new moon day or every Purnima. This is the reason behind we do not observe the solar eclipse on every new moon day, because of the tilt of 5 degree. समझ में आया? आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना आपको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now let us. Okay, very good. Now let us understand three terms, that is eclipse, transit, and occultation. Sorry, occultation. Eclipse, transit, and occultation. We know about the eclipse as we discussed earlier. An eclipse is the result of the total or partial masking of a celestial body by another along an observer line of the site. यानी कि जब 3 celestial body एक complete alignment में आती है और एक celestial body partially या completely block करती है sun rays को या दूसरी celestial body के व्यू को, तो क्या होता है? eclipse. But a transit is either the act of one celestial body passing in front of another, or the time at which celestial body is highest in the sky. अब इन तीनों फिनोमेना को समझने के लिए ये पहला तो आपको समझ में आ गया कि कंप्लीटली या पार्शली ब्लॉक होता है सेलेस्टियल बॉडी. ट्रांजिट में होता है कि जैसे जनरली होता है सन के साथ में. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये सन. हमको बताया कि अर्थ से सबसे ज्यादा दूर हमारे सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल बॉडी है और सबसे बड़ी जो सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम नेकेड आइट से व्यू कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो है सन. तो और सन सबसे बड़ा भी है. सन और अर्थ के बीच में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, जब वो ट्रांजिट करती है यानी कि यहाँ से रोटेट होके जाती है, रिवॉल्व होके जाती है, तो वो इसके लाइट में हमको दिखाई देती है. मैं आपको एक वीडियो भी बताता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा ट्रांजिट. आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, और sir. occultation की डेफिनेशन भी देखते हैं. An occultation occurs when a celestial body is eclipsed by the moon or another solar system celestial body. तो occultation होता है मून के साथ में, ट्रांजिट होता है जनरली सन के साथ में, और एक्लिप्स होता है अर्थ, मून और सन का जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट है उसके कारण. अब एक्लिप्स हमको समझ में आ गया, ट्रांजिट और ऑकुल्टेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ट्रांजिट. Sir. हाँ, आवाज आ रही है, बोलो. So to understand transit, you have to watch this short video. अब इस इमेज में आपको दिख रहा है ये सन है और एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी इसके और अर्थ के बीच में होके निकल रही है. ये है ट्रांजिट. इट मे बी मर्क्यूरी, वीनस or human made satellite like this phenomena is known as transit. दिख रहा है ना आपको, यानी कि सन की यस सर. लाइट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी छोटी सेलेस्टियल बॉडी को जो इन द यूनिवर्स पास हो रही है बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके, नाउ occultation. सर वीडियो चल ही नहीं रही है. अभी चलेगी. ये जो आपको बॉडी दिख रही है व्हाइट कलर में, ये है मून, और उसके पीछे जो छोटा सा दिख रहा है वो है सैटर्न द प्लैनेट. अब सैटर्न प्लैनेट के व्यू को ब्लॉक कर रहा है कौन? मून. बिकॉज द मून कम्स इन बिटवीन द व्यू ऑफ सैटर्न फ्रॉम द अर्थ. व्हेन दिस थिंग हैपेंस इट इज नोन एज occultation. दिख रहा है आपको? ये है सैटर्न. यस सर. ये दिख रहा है छोटा Yes, सा. sir. ओके, समझ में आया आपको? सर छोटा सा क्या है? हाँ,
Now comes annular solar eclipse that is going to happen on 21st of June. So when moon is at farthest approach, means smallest angular size than sun, and moon does not exactly cover the sun. Moon looks smaller than sun, therefore it is not able to block the central region, leaving the outer ring uncovered like this. In general, the size of moon and the size of sun is completely equal as we see in the sky. But on a very rare case, when the moon is farthest distance to the sun, to the earth, then it looks a comparatively smaller size than sun. This is why it can only block the center portion of the sun and left the outer ring of the sun uncovered. When this thing happens, it creates a solar eclipse known as annular solar eclipse, like this. अब इस इमेज में सन जो है थोड़ा बड़ा है और मून थोड़ा छोटा है स्लाइटली, इसलिए सन को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पा रहा है ये, और उसका जो आउटर रिंग है वो हमको विजिबल है, दैट इज नोन एज कोरोना. इसको आप प्रैक्टिकली समझो तो आप जो 1 रुपीज का जो बड़ा वाला कॉइन है उसके ऊपर 1 रुपीज का छोटा वाला कॉइन रखोगे तो जो आपको व्यू मिलेगा वो होता है स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है. मोबाइल की एनुलर सोलर एक्लिप्स यहाँ डिस्कस कर रहे थे हम. लैपटॉप अभी ऑफ हो गया है, लाइट चली गई. एनुलर सोलर एक्लिप्स तो ये क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया. इन दिस इमेज यू कैन सी द फेजेस ऑफ eclipse. So these are different phases of eclipse from starting to the end. Now we will discuss how to observe solar eclipse. Solar eclipse को कैसे देख सकते हैं. Here I want to advise you, please do not observe the solar eclipse with the naked eye. आपको बिना चश्मे के, बिना किसी स्पेशल गॉगल्स के सोलर एक्लिप्स को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए. वी हैव टू यूज सर्टेन थिंग्स टू ऑब्जर्व द सोलर एक्लिप्स, लाइक सोलर व्यूअर और पिन होल कैमरा. And the safest method to observe solar eclipse is the sun projection. In this method, we project the image or the view of the solar eclipse on a physical paper or any sheet. Then we view the view of solar eclipse indirectly, like in this image. This projection is done on a piece of paper, and this is how we can view the solar eclipse safely. Now, why solar eclipse is important for human beings? Because
through solar eclipse, we know the shape of moon and earth, by planets moving around the sun. सर We also do some research activities. Yes. सर वो बिना किसी ग्लासेस के इसका क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जो हमारा आंखों का जो रेटिना होता है, जिससे हम किसी भी चीज को व्यू कर पाते हैं, तो उसको उन सन रेज से नुकसान हो सकता है। आपकी जो विजन है, आपकी जो देखने की क्षमता है, वो भी खत्म हो सकती है। इसलिए आपको डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ना सोलर एक्लिप्स को, ना ही सन को। वी कैन ओनली ऑब्जर्व द सन विद द नेकेड आई ड्यूरिंग द मॉर्निंग और इन द इवनिंग टाइम। अभी भी आपको नॉर्मल डे में भी आपको सन को ड्यूरिंग द डे टाइम, आफ्टरनून के टाइम पे, उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। नाउ annular solar eclipse that is going to happen on 21st June 2020. On 21st June 2020, an annular solar eclipse that is going to happen. It is also known as Ring of Fire. Solar eclipse will be visible from parts of Africa, including the Central African Republic, Congo, Ethiopia, south of Pakistan, and northern India and China. These countries will going to observe the annular solar eclipse. And this is the image of the world. In this image, you can see which portion of the different continents or countries can observe the annular solar eclipse. In this diagram or in this map, there is a light red color lines which shows the path of the annular solar eclipse. That means every place which comes in this line will can observe this annular solar eclipse. और बाकी के जो शेडेड पोर्शन है, वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स विजिबल होगा, एनुलर नहीं होगा. So in this map, we can see there are some states of India where we can see the annular solar eclipse, like Rajasthan, Haryana, New Delhi, Uttarakhand, and some part of Uttar Pradesh. These states and only certain portion of these states can observe the annular solar eclipse, and the rest of India will observe the partial solar eclipse. Understand? Yes, sir. And this is the map of India. Here we can see some sites or some places where we can observe the annular solar eclipse. The red color line will show the places which can see the annular solar eclipse. Here we can see some parts of Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, and UP, and Haryana can observe the annular solar eclipse. Now talking about the major metro cities of India. There are 5 metro cities: New Delhi, Kolkata, Mumbai, Bangalore, and Chennai. All these 5 metro cities will observe partial solar eclipse, not annular solar eclipse, because these places does not comes under the view path of the annular solar eclipse. ये जो रेड कलर की लाइन है, इस पाथ में ये सिटीज नहीं आती है, इसलिए इन सिटीज में पार्शियल सोलर एक्लिप्स आपको दिखाई देगा. न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई. Now talking about the region or places where we can see the annular solar eclipse. These are Dehradun, Kurukshetra, Sirsa, Suragarh, and Yamuna-Nagar. These places will observe the annular solar eclipse. There are also some activities that can be performed during the eclipse. Like we can find the time of maximum annularity, the duration of eclipse.
We can also find the percentage of annular solar eclipse and the angular size of sun and moon. And we can also calculate the earth circumference. And we can also observe the nature, the sea waves, plants, animals, and bird behavior during the solar eclipse. So I hope you understand now what is solar eclipse and why the 21st of June going to be a very important date in astronomy. Because on Earth, we are going to observe the annular solar eclipse. And this is also going to be very important because this is going to be the last annual solar eclipse in this century. This 21st century, this is going to be the last annular solar eclipse. In this century, it will not repeat. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Now, I would like to take some questions or some myth. These are associated with eclipse or Surya Grahan or Chandra Grahan. So let's take these questions. I will also share a magazine for you for your further reading. So here are some questions which are associated with the eclipse. Here. Do any special rays imitate during a solar eclipse? That is a question or confusion in everyone's mind, that why we do not observe the sun. Is this emit a special kind of rays during solar eclipse? So the answer is, during the eclipse, the radiation emitted by the sun remains the same as in any other days. However, moon, by coming in between the earth and the sun, block the sun radiation at places on the earth where eclipse is visible. So there is no special kind of rays during solar eclipse. Second, how the moon, which is smaller than earth, able to cover the whole sun during a total solar eclipse? Because we know that the moon is in size 1/4 of earth, and the sun in size 400 times bigger than earth. So how the smaller moon can block or completely block the view of sun? It is because the size of the moon is 400 times smaller than the sun, and coincidentally the moon is also 400 times closer to the earth than to the sun. And this is why when seen from the earth, the apparent size of moon appears to be equal to the apparent size of the sun. इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक रोड के ऊपर खड़े हो और कम से कम 5 या 10 किलोमीटर दूर एक ट्रक खड़ा हुआ है, क्या है, एक ट्रक, और आपके पास सेम उसी मॉडल का एक टॉय ट्रक भी है जिसको खेलने के लिए यूज करते हैं बच्चे, तो आप रोड पर उस ट्रक को, छोटे ट्रक को रखोगे और 10 किलोमीटर दूर खड़े उस ट्रक को देखोगे, तो दोनों आपको कंपैरेटिवली एक ही साइज के लगेंगे. क्यों? क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो आपसे बहुत दूर है. एंड दिस इज व्हाई द सन एंड मून visible as a similar size from the earth. Now the third question, it is safe to cook or eat food during the eclipse, because it is a myth in society that we should not cook the food or we should not eat
food during the eclipse? सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमको खाना नहीं खाना चाहिए या हमको खाना नहीं बनाना चाहिए? सर वो So क्यों? आंसर, ये तो क्वेश्चन है, मैंने अभी आंसर नहीं दिया है. So the myth is completely wrong. There is no scientific evidence that we should follow this kind of practice. The eclipse is a natural phenomena and it doesn't cause any harm to the food we cook or we eat. It is completely natural happening. So it does not make any harm to our food or our food practice. So we can eat any kind of food or we can cook any kind of food in our home. So it is a myth. Next, is watching the solar eclipse is harmful to pregnant women or its fetus? And answer of this question is due to the misconception that the people believed the pregnant woman should not view or step out of the home during the eclipse. Everyone, including the pregnant woman, can watch this eclipse with proper solar filter or goggles. So it is also a myth. There is no harm to any human beings, including the pregnant woman. Everyone can watch the eclipse with proper precaution, with proper solar filter, proper solar goggles. Next, it is safe to step out of the home during the eclipse. क्योंकि ये भी मिथ है कि ग्रहण के टाइम पे, एक्लिप्स के टाइम पे आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. We should stay at home. It is also a myth. Anyone can go out and watch this rare event with proper safety measures, as looking at the sun directly with naked eye may harm your eyes. So it is also a myth. You can go anywhere during the eclipse, but you should not watch the eclipse with naked eye. You should follow the safety measure. Next, it is necessary to take a bath after an eclipse. This is also a myth in society that we should take a bath after eclipse. सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हमको बाथ यानी कि नहाना चाहिए. So it is also a myth. Taking a bath twice a day is completely okay and it is also advisable for personal hygiene. But however, there is no necessity to take a shower or bath during or after the eclipse. There is no need to take shower or bath. So this is also a myth. Next, do eclipse bring bad lucks? Do eclipse brings bad luck for humans? ये भी myth है कि eclipse होने के टाइम पे आपको बैड लक मिलता है यानी कि आपके काम बिगड़ जाते हैं ऐसा कुछ, तो ये भी myth है. Eclipse is a beautiful and natural and very rare celestial phenomena that everybody should watch and enjoy. It doesn't cause any kind of harm to any living beings. So these were some myths in society which I addressed. Now, if you have any question regarding to the eclipse, you can ask. सर 21 जून को कितने कितने बजे वो होगा एक्लिप्स? That is going to be very important question. So the magazine which I going to share on WhatsApp, it has a complete timeline on which we can observe the solar eclipse. Let me show. I would like to show this. Like in this magazine, it has a complete table. I would like to advise you should read this magazine to increase your knowledge regarding your geography. So here is a list. You can see there are some name of places like Gharsana in Rajasthan will observe the partial solar eclipse from 10 and 12, 10 बज के 12 मिनट
और 26 सेकंड पे वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्लीट सोलर एक्लिप्स कब बनेगा? 11:50 पे। और ये पूरा जो शेड्यूल है 11:12 से लगाकर 1:36, टोटल 3 hours 24 minutes तक ये एक्लिप्स रहेगा। So it is a complete table with places on which the people can observe the solar eclipse. So in general, in India, we are going to observe the solar eclipse Sir, no. of, huh, after 12 AM, 10:12 के बाद आपको सोलर एक्लिप्स विजिबल होगा। Now, I would like to remind you again, no one should watch the solar eclipse with naked eye. Understand? Yes, sir. So I will share this magazine, and I would like to advise you should read the complete and every page of this magazine so that you can understand this concept better. Thank you, sir. So this is all about the class and the solar eclipse. I hope you enjoyed it. Thank you for being with us. Thank you, everyone.